પધારી રહ્યા છે અને અપૂર્વભાઈને ત્યાં મળતો લાભ મળી રહ્યા છે એટલે એનું વધારે અમને બહુ ગર્વ છે કે મારા સાહેબ અમારી સોસાયટીમાં પધાર્યા છે. ધન્યવાદ. ગુરુ ભગવંતસિંહ આચાર્ય શ્રી અમારા ત્યાં આજે ઉસ્માનપુરામાં એમનો વિહાર થાય છે. ગુરુ ભગવંતશ્રી મહાસતીજી મહારાજ સાહેબ અને મા શ્રવણજી મહારાજ અહીંયા ઉસ્માનપુરામાં આજે પધારેલ છે, તો તેમને કોટી કોટી વંદન છે અને અમને સારો એવો લાભ મળેલ છે. ઉસ્માનપુરા સત્યવાદી સોસાયટી પાસે આજે સવારે એમનો વિહાર ચાલી રહ્યો છે. युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी का अभी अहमदाबाद में आगमन हुआ है। पूरे देश की यात्रा करते हुए पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और ये पूरे गुजरात की कच्छ भुज आदि की यात्रा करते हुए आचार्य महाश्रमण जी विश्व शांति का संदेश देते हुए इनका आगमन अहमदाबाद में हुआ है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है कि किस प्रकार से आज सद्भावना बढ़े और नैतिकता का विकास हो, समाज के अंदर में सौहार्द का विकास हो, भाईचारे का विकास हो, नशा मुक्ति का ये भाव जागृत हो, इस उद्देश्य के साथ में आचार्य श्री महाश्रमण जी यहाँ पे पधारे हैं। और उनके साथ में बहुत बड़ी धवल सेना 100 से अधिक साधु साध्वियाँ यहाँ पर अहमदाबाद में उपस्थित है। अहमदाबाद समाज में बहुत अपूर्व उत्साह है, जोश है। अनेक समाज इसके लोग आचार्य श्री के नज़दीक आ रहे हैं और आचार्य श्री का ये अनुभव, आचार्य श्री का ये चिंतन कि केवल उपदेश से व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता, केवल सैद्धांतिक बातों से, अच्छी अच्छी बातों से व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता, जब तक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रायोगिक प्रयोग नहीं बताया जाए। तो आचार्य श्री प्रयोग और सिद्धांत दोनों में समन्वय बिठाते हुए उनका एक सूक्त है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा तो समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा तो राष्ट्र और विश्व नहीं बदल सकता। तो व्यक्ति में परिवर्तन कैसे आए, उनका आवेश शांत कैसे हो, इन सारी चीज़ों को लेकर आचार्य श्री ये यात्रा कर रहे हैं और इसका फल भी हमें सामने दिख रहा है, ये परिवर्तन भी सामने दिख रहा है। अनेक लोगों ने नशा को छोड़ा, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आचार्य श्री के सन्निधि में आकर नशा मुक्त हुए हैं और भी बहुत सारे परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का ये कार्य हो रहा है। और मुझे विश्वास है और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि ये अहमदाबाद वासी इस अवसर का विशेष लाभ उठाएंगे और अहमदाबाद एक प्रकार से ऐसा संदेश विश्व को देगा कि पूरे विश्व शांति का यहाँ से प्रेरणा ले सके। मैं इसी भावना के साथ में ओम अरहम। तेरा पंथ समाजना આગેવાનો આપ જોઈ રહ્યા છો કે સાધુ મહારાજ સાહેબના આગમન માટે આપ જોઈ રહ્યા છો કે ગુરુ ભગવંત સાહેબ વિહાર કરતા માટે ઉસ્માનપુરા ત્યાંના જઈ રહ્યા છે અને એમની જોડે એમના અનુયાયીઓ છે અને મોટી સંખ્યામાં જ્યારે લોકો જોડાય છે ત્યારે એક એવી પરિસ્થિતિ હોય છે કે વરસાદમાં આપણને કંઈ લાભ નથી મળતો, પણ આપણને ખૂબ જ સારો લાભ આજે દર્શનનો મળ્યો છે. મહાશ્રવણજી જ્યારે અમદાવાદ પધાર્યા છે ત્યારે એમને આવકારવા માટે અમદાવાદવાસીઓ એમની જોડે જોડે ચાલી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર છે. આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણનું આજે વિનય સોસાયટીમાં પગલાં કરવાના છે અને એ મહાશ્રમણજી જ્યારે આવશે તો એમના સ્વાગત માટે આખી સોસાયટી રાહ જોઈ રહી છે. કેમેરામેન અંકિત પ્રજાપતિ સાથે અમદાવાદથી અલ્પેશ શાહ.